Hello, dear young learners. A very warm welcome to your Learning Buddy Aprajita's EVS class. So, children, how are you all? Excited to start something new, to read something new? So, let's start with your Environmental Studies Class 4 by Acknowledge Series Amit Publishing House. So, children, here we are with chapter number 7, and the chapter is फ्लावर्स. किसको फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते हैं? सबको पसंद है ना फ्लावर्स? Yes, I too love flowers. देखना बहुत अच्छा लगता है. Yes, there are different kinds of flowers which we see, which are so beautiful. कितने अलग-अलग तरह के flowers होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और there are many flowers which are not commonly seen also. So let's read in this chapter about the different flowers. Flowers are the most beautiful part of a plant. एक plant का सबसे सुंदर part जो होता है वो flower. They come in different shapes, sizes, colors and smell. Yes, एक ही तरह के flowers तो नहीं होते हैं, सब अलग-अलग तरह के होते हैं, different kinds के होते हैं, different shapes के होते हैं, different sizes के होते हैं. खुशबू भी सबकी अलग-अलग होती है. They may grow single on a stem or in a bunch. Flowers contain nectar. They bloom at different times of the year. एक साल में वो अलग-अलग टाइम पे खिलते हैं. Flowers are seen throughout the year, but some flowers bloom in a particular season only. हम पूरे साल हमें दिखते हैं flowers, but कुछ flowers ऐसे होते हैं जो कि एक particular time होता है उनका पूरे year में, उसी टाइम पे वो grow करते हैं. On the basis of blooming season, flowers can be divided into 3 categories. अब इस blooming season की जब ये जो time होता है इनका खिलने का अलग-अलग time, इसके basis पे हम इन flowers को 3 categories में divide करते हैं. Bulb flowers are such as daffodils and tulips bloom during the spring season. ये जो daffodil और tulip है ये bulb flower और ये कब ब्लूम करते हैं? स्प्रिंग सीजन होता है. स्प्रिंग सीजन में the daffodil and tulip they bloom. Flowers like marigold and sunflower are seen during the summer season. गर्मियों में कौन से flowers दिखते हैं हमें? marigold, गेंदा और sunflower. Fine? Marigold and sunflower they bloom during the summer season. और daffodil और tulip कौन से सीजन में था? स्प्रिंग सीजन. Flowers like pansy, dahlia and jasmine are seen during the winter season. Pansy, dahlia, these are seen during the winter season. सर्दियों में दिखते हैं, ये bloom करते हैं. Pansy, dahlia and jasmine. Now, some flowers like lily and rose are seen all the year round. पूरे साल हमें जो फ्लावर दिखता है वो है लिली एंड रोज. ओके, नाउ बड्स ब्लूम इनटू फ्लावर्स. जो कलियां होती है वो फ्लावर्स बन जाती है. हाउ? द फ्लावर फर्स्ट अपीयर्स एज अ बड ऑन द स्टेम. एक स्टेम पे एक छोटी सी कली सी हमें दिखती है, बड. इन बड द पेटल्स, that is the colored part of the flower, are tightly closed together. अब ये जो colored part होते हैं ना flowers के, ये petals एक bud में tightly closed होते हैं, एक साथ बंद होते हैं. The sepals surround the petals. जो sepal होता है वो petal को surround करता है. Gradually the bud grows in size and the petals open into a beautiful flower. धीरे धीरे ये जो petals हैं धीरे धीरे खुलने लगते हैं और ये एक beautiful flower बन जाता है. Flowers develop into fruits. अब flower इसके बाद क्या होता है? fruit में कन्वर्ट. Fruits carry seeds inside them. fruit के अंदर seeds होते हैं. The seeds produce new plants. उन seeds से नए plants बनते हैं. So flowers are the reproductive organs of the plant. एक plant का जो reproductive organ है वो है flower.
they give rise to more new plants. इसी से और नए plants बनते हैं. Flowers bear a yellow colored powdery substance called pollen grains. आपने अगर देखा हो फ्लावर के अंदर एक whenever you put a hand in that flower अंदर तो आपके हाथ पे येलो येलो चीज लग जाती है. एक वो पाउडरी सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं pollen grain. Flowers also contain tiny eggs. छोटे-छोटे eggs भी होते हैं. When the pollen and egg meet, a fruit is formed. Pollen और egg जब meet करते हैं तो एक fruit बनता है. Birds, butterflies, bees and wind help the pollen to reach the eggs. अब ये birds, butterflies ये लोग help करती हैं और wind से भी ये pollen grains जो होते हैं वो eggs तक पहुंचते हैं. ओके? और उसके बाद वो fruit बनता है. Though the flowers look different, they have the same basic parts. सारे flowers जितने भी flowers हैं वो सब अलग अलग देखने में हैं, लेकिन उनका जो basic part है वो same होता है. See, bud, flower, fruit, seeds, seedling, new plant. Fine? Now, parts of a flower. Basic parts वही होते हैं flower. Flowers have the following parts: petals, sepals. Now, look here very carefully. Look here, children. Stamen, carpel. See, carpel. This is petal. This is petal. This is sepal. जब petals close होते हैं, जब आपने देखा होगा जब वो bud होता है तो इसके नीचे green सा एक ऐसा कुछ होता है जो इसके petals को tightly hold करके रखता है, उसको sepal बोलते हैं. And then carpels are also there, and petals are bright in color and sometimes have a sweet smell. इन petals में ही sweet smell भी होती है. Sepals protect the flower when it is a bud. अभी आपको बताया ना sepal जो होता है वो इसको protect करता है जब ये bud होता है, उसके अंदर फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. Stamen is the male part of the plant that contains the filament and the anther that contains pollen grains. Stamen क्या होता है? Is the male part of the plant. See, stamen में जो stamen है इसमें anther and filament होता है. Fine. This is the male part of the plant. Anther and filament. ये male part होता है plant. Carpel is the female part of the plant that contains the stigma, style and ovary. ये जो stigma, style and ovary है ये female part of the plant है. This is the female part of the plant with ovules. इसमें क्या है? Stigma है, style है और ovary है with ovule. ये देखिए ovule with embryo sac. ये जो है ये ovule. Flowers in our lives. हमारी लाइफ में कौन से flowers? रंगोली made from petals. देखिए क्या क्या काम करते हैं जो flowers हैं हमारी लाइफ में, कैसे यूज करते हैं. रंगोली made from petals. अब petals से हम रंगोली भी बनाते हैं flower के petals से. We get saffron from the crocus flower. ये जो crocus flower है इसमें से saffron मिलता है. Okay? On religious festivals, idols of deities are decorated with garlands made of marigolds and roses. गेंदे और गुलाब से बने हुई मालाएं हम चढ़ाते हैं जब भी religious festival. Flowers are used to decorate our homes. डेकोरेट करने के लिए. Petals of flowers are used to make rangoli. अभी आपने देखा रंगोली बनाते हैं हम flowers के petals से. Many women wear flowers in their hair or pin it to their dresses. We greet people with garlands and bouquets. हम garlands, flower के garlands और bouquets से लोगों को greet भी करते हैं. Sweet smelling flowers, jasmine and rose, are used to make oils and perfumes. Jasmine और rose का oil भी बनता है, perfumes भी बनते हैं. Flowers are a favorite with artists. Flower designs called floral motifs are used as pottery, fabrics, jewelry, embroidery and wall paintings. देखिए
फ्लोरल मोटिव से डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर मेड. ओके, फ्लावर डिजाइंस जो बनते हैं, जैसे देखिए पॉटरी में भी फ्लावर डिजाइंस बनाए जाते हैं, देन फैब्रिक्स पे भी फ्लावर डिजाइंस, ज्वेलरीज में भी फ्लावर डिजाइंस होते हैं, और बैग्स में, पेंटिंग्स में, हर जगह फ्लोरल डिजाइंस बनाए जाते हैं. फ्लोरल मोटिव्स वी कॉल. फ्लावर्स एज फूड. फ्लावर को एज ए फूड कैसे यूज? सम फ्लावर्स आर ईटन. Flowers of kachnar, banana, and pumpkin plants are cooked and eaten as vegetables. Yes, children. कचनार के फूलों को खाया जाता है, पंपकिन के फ्लावर्स को खाया जाता है, और जो बनाना होता है उसके भी फ्लावर को खाया जाता है. We also eat the buds of cauliflower and broccoli. Yes, broccoli और cauliflower ये तो flowers ही है, इसको भी हम खाते हैं. Certain spices like clove comes from flower buds. ये जो clove होता है जिसे लौंग कहते हैं, वो flower buds से आता है. Saffron from the crocus flower and rose water prepared from rose petals is used in food. Now honey from flowers. Flowers में से honey कैसे? Honeybees are one kind of insects that visit sweet smelling flowers. जो sweet smelling अच्छी मीठी खुशबू जिनकी होती है जिन फ्लावर्स की, वहां पे honeybees जाते हैं. When a bee finds nectar, it returns home and begins to dance to tell the other bees. और वो घर आके जब किसी हनी बी को किसी फ्लावर में नेक्टर मिलता है तो वो आके बाकी बीज को बताती है. From this dance, the other bees come to know where to go and to look for flower. इस डांस को देख के दूसरी हनी बीज को भी पता चल जाता है कि कहाँ पे जाना है उनको, कहाँ उनको फ्लावर मिलेगा. They suck nectar from the flowers and carry it to their hives. अब वहां से वो नेक्टर सक करती हैं और अपने beehives में वापस आती हैं. A beehive consists of thousands of small chambers. एक मधुमक्खी के छत्ते में thousands of छोटे-छोटे chambers बने हुए होते हैं, called combs. These combs are like small rooms where the bees store nectar and pollen, lay eggs and raise their young ones. अब ये जो छोटे-छोटे कॉम्स बने होते हैं, यहाँ पे ये क्या करती हैं कि नेक्टर स्टोर करती हैं और पॉलन स्टोर करती हैं, फिर दे ले एग्स देयर और वहाँ पे अपने छोटे-छोटे जो बीज निकलती है उनको बड़ा करती है. Now see, a bee collecting nectar from the flower, then a bee storing nectar in the combs. यहाँ पे स्टोर कर रही है कॉम्स में. Bees are kept in a special box. उनको स्पेशल बॉक्सेस में भी रखा जाता है हनी बीज. The bees spit out the nectar that they collect from the flowers and seal the comb with wax that they produce. अब ये क्या करती है, आती है वहां से नेक्टर लेके फ्लावर से और वहां आके कॉम्ब के अंदर स्पिट कर देती है उस नेक्टर को और उसको बंद कर देती है, सील कर देती है उस कॉम्ब को वैक्स से जो कि वो प्रोड्यूस है. Slowly the nectar turns into honey. और धीरे-धीरे ये नेक्टर हनी बन जाता है, शहद बन जाता है. Each beehive has queen bee that lays eggs. There are a few male bees called the drones in the hives. अब beehive में queen bees होती हैं जो कि उनका काम ही होता है eggs लेकर, और वहाँ जो male bees होते हैं उनको drones बोला जाता है. A very large number of worker bees live in a hive. एक hive में सबसे ज़्यादा worker bees होते हैं. These bees work the hardest. They build the hive, look after the young ones and collect nectar from flowers. सबसे ज़्यादा काम ये worker bees करती हैं. वो क्या करती हैं? वो hive बनाती हैं, bee hive छत्ता बनाती हैं और छोटे-छोटे bees की देखभाल करती हैं और nectar flowers से collect करके लाती हैं. Extracting honey. अब honey कैसे extract किया? The following steps are included in the extraction of honey. A fire is lit under the beehive to scare away the bees. अब beehive में से मधुमक्खी के छत्ते में से जब हनी निकालना होता है तो क्या सब तो नहीं निकाल सकते. There is a way to take out the honey out of it. तो सबसे पहले छत्ते के नीचे आग जलाई जाती है जिससे कि सारी बीज डर के मारे भाग जाती है. The hive is removed. फिर उस beehive को हटाया जाता है. Honey is extracted from the combs. अब उन छोटे-छोटे combs में से honey निकाला जाता है.
The art of beekeeping is called apiculture. जो beekeeping, जो boxes में bees को रखा जाता है, उस art को apiculture बोलते हैं. Many people rear bees. They are called apirists. जो ये apiculture का काम करते हैं, उनको apirists बोलते हैं. They collect honey and sell in the market. The place where bees are reared is called apiary. Apiary. Okay? अब देखिए, एपिकल्चर बोलते हैं, द आर्ट ऑफ बी कीपिंग को एपिकल्चर बोला जाता है. द पीपल हु रियर द बीज आर नोन एज एपियरिस्ट्स एंड द प्लेसेस वेयर द बीज आर रियर्ड इज कॉल्ड एन एपियरी. फाइन. हनी इज फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. हनी में बहुत विटामिन्स होता है और मिनरल्स भी होते हैं. A visit to the florist. Now, अब ये florist कौन होता है? ये देखिए florist का shop. A florist is a person who sells flowers. जो flowers बेचता है उसे florist. Every city or town usually has a wholesale market that sells flowers. It is called a flower mandi. हर एक जगह, हर city या town में क्या होता है? एक wholesale market होता है flowers. और उसको क्या कहते हैं? फ्लावर मंडी भी कहते हैं. From where florists buy flowers in bulk and sell them in their shops. अब उस फ्लावर मंडी से ये जो फ्लोरिस्ट होते हैं जाके बल्क में फ्लावर्स खरीदते हैं और अपने शॉप में बेचते हैं. ओके, दिस इज अ फ्लोरिस्ट शॉप. फाइन चिल्ड्रन, आया समझ में आपको कुछ फ्लावर्स के बारे में? अच्छी अच्छी चीजें पता चली ना? Yes. So now the exercise time. Test yourself. What is reproductive organ of the plant? The reproductive organ of the plant is the flower. The flower is the reproductive organ of the plant. So children, what is a petal? Petal क्या होता है? Petal is a part of a flower and it has a bright color and sometimes it has sweet smell also. So now children, take the correct options. Flowers contain seeds, nectar, food or water. Flowers में क्या होता है? Nectar. It contains nectar. So take here. Okay? Moving further, dash bloom during spring season. अब spring season में कौन सा flower bloom करता है? Marigold, rose, jasmine, tulip. Tulip blooms during the spring season. Take care. Lily and rose are seen during the winter season, during the summer season, during the spring season, all the year round. Lily and rose are seen all the year round. Carpel contains style, stigma and petals. Petals, sepal and style. Style, stigma and ovary. Carpel contains style, stigma and ovary. Fine children? Dash of kachnar, banana and pumpkin are cooked and eaten as vegetables. Leaves, fruits, flowers, roots. Kachnar, banana और pumpkin क्या? Flowers खाया जाता है. They are cooked and eaten as vegetables. Now what's next? Learn more. Name the following. Now we have to name it here. Plant with medicinal value. कौन सा plant में medicinal value होता है children? The leaf has a medicinal value. Neem. Fine. Yellow colored powdery substance. Yellow colored powdery substance is known as pollen grains. Grain. Pollen grain.
Fine. Female part of the plant. Carpel. Carpel. The male part of the plant. क्या बोलते हैं मेल पार्ट ऑफ प्लांट को? स्टेम. STAMEN. स्टेम. ओके. नाउ डिफाइन द फॉलोइंग. अब हमें कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं, इनको हमें डिफाइन करना. व्हाट आर दे? द pollen grains, the powdery substance which is found inside the flower are known as the pollen grains, children. Okay. Now the floral motifs, the floral pattern which is drawn on anything, which is made on anything like pots, jewelries, and the bags or fabrics are known as floral motifs. Combs. In the beehive, there are different sections made where the nectar is being protected. Those are known as combs. Drones. Who are drones? The male bee is known as drones. The male bees are known as drones. Agriculture. Agriculture is the way of growing anything, either growing a crop or keeping the bees or rearing the bees. These are known as the agriculture. Agriculture is basically growing of any crop. Apiarists. Who are apiarists? Apiarists are the people who rear the bees. The bee rearers are known as apiarists. Apiary. The place where the bees are reared is known as apiary. Florist. Florist is a person who sells the flowers. Okay, children? Now we come to the question answers. With the help of a labeled diagram, describe the different parts of a flower. अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें एक लेबल डायग्राम है फ्लावर का. जस्ट गो थ्रू दैट डायग्राम. उसको देखिए ध्यान से, समझिए उस डायग्राम को. देन यू ड्रॉ इन योर notebook that diagram and label the parts. Describe the different parts of the plant. Different parts of the flower. How are flowers useful to man? Now, flowers are useful to man in many different ways. अभी आपने बहुत सारे points पढ़े थे ना. Flowers are used as the garlands or the bouquets. Then we make rangoli with the flower petals. Then the flowers are used for worshipping in any religious festival. We use flowers. We put the flowers on our deities. And then these floral patterns are also used on different things. In many ways, the flowers are useful to us. Now, why are flowers important? Why are flowers important? Flowers are because they are a very beautiful thing. Flowers are also eaten as we eat the flowers also. Many flowers are eaten as vegetables like banana, kitchener, and pumpkin. These flowers are eaten as vegetables also. And we use the flowers for medicinal value also. Crocus plants flower is used as saffron. So the flower is very useful to us. It is used in many different ways. So it is very important for us. How do bees make honey? Now, the bees first go and suck the nectar from the flower, and from there they carry the nectar to the beehive, and in the beehive there are combs made. In that comb they just spit that nectar and seal it with the wax which they produce. And after some time this nectar turns into honey, and in this way
they make the honey. Describe the process of extracting honey. Now, from the beehives, when the honey is ready, from the nectar it turns to honey, then the fire is lit under the beehive. So all the bees they are scared away, they run away, and after that hive is cut down, it is brought down, and there from the comb, from the honeycomb, the honey is extracted out. Now, children, some activities. Why is honeybee called a social insect? It is called a social insect because it helps the human beings in making honey, which is the honey which is used in many different ways. So that's why it is, and it is known as social insect because it works in a team. With their teamwork, they produce such a sweet thing known as honey. So it's a social insect. Make a herbarium, paste in it any 5 dried flowers and leaves. What is a herbarium, children? It's a file in which you paste different kinds of flowers and leaves. अलग अलग तरह के फ्लावर्स और लीव्स प्लग कीजिए और उसे अपने herbarium फाइल में पेस्ट कीजिए. Write about your favorite flower. Paste its picture. अब आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है उसके बारे में लिखिए और उसका एक पिक्चर पेस्ट कीजिए. तो अगर आपको कोई पिक्चर मिलता है उसका पिक्चर पेस्ट कीजिए. If you get the original flower, then take that flower, paste it, dry it, and then paste it. Why should we not pluck flowers? Discuss in class. Hint: flowers produce fruits. Fruits have seeds. Seeds reproduce new plants. Now, children, why should we not pluck flowers? हमें flowers क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? We should not pluck flowers because if we pluck flowers, we are destroying, we are spoiling the fruits which the flowers will produce, and after that again it will produce some seeds, and these seeds will produce some new plants. So if we pluck flowers, we destroy all these things. Now there are a group discussion on if there were no bees. अगर bees नहीं होते तो क्या होता? What would have happened? वो pollens transfer नहीं होता, that nectar would have not been transferred, the honey would have not been there. तो honey कैसे बनता? फिर एक group discussion आप अपने क्लास में होल्ड कीजिए about if there were no bees. अगर bees नहीं होते तो क्या होता? Fine, children. So here we end the chapter. I hope you had a great time with me and you enjoyed the chapter too. कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें आपको पता चली ना? बीज के बारे में भी पता चला, फ्लावर्स के बारे में भी पता चला, कितनी सारी चीज about the parts of flowers and how the pollination happens, what is the reproductive organ of a plant. So we got to know many different things. So children, stay excited for the clamp of another video. I'll be back with a new chapter for you. Till then, stay happy, stay blessed, and keep learning. Bye.